Hello students, welcome to this class on Introduction to History. We all have studied history at some point of our life, is it not? Or we must be having a little knowledge about history. Or at least we must have heard some incidents, some stories from our parents and grandparents from past. But is history exactly the stories which we have been told? Is history all about stories and past? We shall have a look in this lecture. This lecture will be covered under the following headings. First, what is history? Second, how important are dates? Third, which dates are important and which dates are not? Fourth, how to periodize. That is, which are the sections or parts into which history is divided. Next, what is colonial or what do we mean by colonial? Next, the sources to study the colonial history of India. And at last, we would be looking at some extra sources to study the colonial history of India. One thing that must be kept in mind is that this lecture and all the upcoming lectures will be concerned with the colonial history, or what we say the modern history of India. So let us start with the first topic. What is history? This is the first topic. What is history? If we look at the first point, we will see facts are not history. The analysis of those facts is called history. Now, what do we mean by analysis of facts? By analysis of facts, we mean asking questions like what, why, how, when, where, etc. For example, if someone says that India got its independence in 1947, this is not history, this is a fact. This would become history if we ask questions like what did the independence mean? When did India get its freedom? Or who were involved in the freedom of India? Or what was the impact of the independence, and so on. Now, answering these questions will make up history. यानी कि अगर कोई कहता है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली, ये हिस्ट्री नहीं है, ये एक फैक्ट है. ये हिस्ट्री तब बनेगा जब हम इससे रिलेटेड इसके आसपास क्वेश्चंस पूछेंगे कि भारत को आज़ादी कब मिली, या भारत की आज़ादी का मतलब क्या था, भारत की आज़ादी से क्या क्या बदलाव आए, भारत की आज़ादी में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे. जब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे उस फैक्ट से, तब जो आंसर्स निकल कर आएंगे, जो उत्तर निकल कर आएंगे, वो हिस्ट्री होता है. एंड व्हेन वी एनालाइज these facts by asking these questions, we make an attempt to understand our past. यानी कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, एक जानकारी मिलेगी हमारे पास्ट के बारे में. सो हिस्ट्री इज़ एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट. इट इंक्लूड्स द सोसाइटीज़ ऑफ पास्ट, द पीपल दैट यूज्ड टू लिव, their lifestyle, the food they ate, the clothes they wear, the trade, and so on. Moving on to the next topic is the importance of dates in history. Just now we have seen that history is a study of the past. Now when we study past today, it is very natural and it is very obvious that there are changes that have happened over time. यानी कि जब हम हिस्ट्री में पास्ट की पढ़ाई करते हैं तो एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है कि तब जो सोसाइटी थी, तब जो चीज़ें थी, वो आज के टाइम में जब हम पढ़ रहे हैं तो काफ़ी चेंज हो चुकी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी स्टडी अबाउट महात्मा गांधी, so the kind of society, the kind of politics, or the kind of economy that was during Mahatma Gandhi does not exist today. The economy, the society today is very different from what it was 100 years ago during the time of Mahatma Gandhi. So changes occur with time, and these changes cannot be measured without dates. यानी अगर हमारे पास डेट्स नहीं होंगी तो हम इन चेंजेस को मेजर नहीं कर पाएंगे.
For example, if you go and talk to your grandfather, he would say that there were no mobile phones or no internet 50 years ago, that is around 1970. So if we compare 1970 with today, that is 2020, a change has occurred. That is, now we have internet and mobile phones. So how do we measure this change? We measure it with time, with date. 1970 is a date and 2020, that is 2020, is also a date. So we could measure this change easily because we had dates. यानी कि दादाजी अगर कहते हैं कि 1970 में मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट नहीं होते थे, तो आज से 50 साल पहले की वो बात कर रहे हैं, और अब की सोसाइटी में इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, यानी कि 50 सालों में ये चेंज आया है. तो ये जो 50 साल की हम बात कर रहे हैं, ये खुद में एक डेट है. 1970 भी एक डेट है और 2020 भी एक डेट है. तो ये चेंज हम मेजर नहीं कर पाते अगर हमारे पास ये डेट्स नहीं होते. Similarly, when we ask historical questions like when did agriculture start or when did the British arrive in India, to answer these questions we will have to refer to some date. ये जो दो बेसिक क्वेश्चंस अगर हम किसी से पूछें हिस्ट्री से रिलेटेड कि एग्रीकल्चर पहली बार कब स्टार्ट हुआ था और इंडिया में ब्रिटिश कब आए थे, तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें एक स्पेसिफिक डेट को रेफ़र करना पड़ेगा. और इसीलिए हिस्ट्री में डेट्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज इन हिस्ट्री वी स्टडी द पास्ट एंड द पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट द हेल्प ऑफ डेट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, dates are not precise and fixed. They usually refer to a period or a span of time. Thus, most of the dates are proximate, not accurate, and refer to a period of time rather than a pinpoint date. What this point wants to tell us is that when we try to answer the historical questions, we have to refer back to some date. But that date may not necessarily be a fixed date. For example, if you ask someone, when did the British arrive in India or when did the British rule start in India, there is no one fixed date. That is, the British rule started on 12th of February 1757. There is no such fixed date. We just say the British rule or the British started coming in India from late 17th century and early 18th century. यानी कि जब हम किसी हिस्टोरिकल क्वेश्चन को आंसर करते हैं उसकी कोई एक फिक्स्ड डेट नहीं होती. जब कोई कहता है कि ब्रिटिश भारत में कब आए, उसकी कोई फिक्स्ड डेट नहीं है कि ब्रिटिश 12 फरवरी 1757 को ही आए थे या इस डेट से आना स्टार्ट किया था. इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें एक पीरियड को रेफ़र करना होगा, यानी कि ब्रिटेन या ब्रिटिश ट्रेडर्स ने इंडिया में आना स्टार्ट किया लेट 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में. दैट इज़ वी आर रेफरिंग टू अ स्पैन ऑफ टाइम, अ स्पैन ऑफ 40 years or 50 years in history. So the dates are not very precise and very fixed. They refer to a period. The next point says, why is then history regularly associated with dates? हिस्ट्री को हमेशा डेट्स के साथ ही एसोसिएट क्यों किया जाता है? इट इज़ बिकॉज अर्ली हिस्ट्री रिवॉल्व्ड अराउंड किंग्स एंड बिग पीपल. That is, the kings that used to rule our lands and our nations centuries ago, let us say 500 or 600 years ago, they had a desire that they should be known by the people after their death. यानी कि हर राजा की एक इच्छा होती थी कि जब वो मर जाए तो लोग उसे जाने, उसे पहचाने, उसको याद रखें. So for this purpose, these kings had historians in their court. And what these historians used to do was that they used to write history only related to the king,
उन हिस्टोरियंस का जो सब्जेक्ट मैटर होता था, जिस बारे में वो हिस्ट्री लिखते थे, वो केवल और केवल उस राजा के इर्द गिर्द घूमती थी, केवल उस राजा से कंसर्न रहती थी. The questions that these historians used to ask or answer were like, when was the king crowned? Or when did he win this battle? Or when did he die? Or when was his son or the prince born? So they used to answer these questions while writing the history of that king. So for this purpose, history for long has been associated with dates. तो जब वो हिस्टोरियंस अपनी हिस्ट्री बुक्स में केवल इन सब चीज़ों को लिखते थे कि ये राजा राजा कब बना, इसने ये युद्ध या ये जंग कब जीती, या इसके राजकुमार का जन्म कब हुआ, तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक डेट की ज़रूरत होती थी. सो दिस इज़ द रीज़न वाई हिस्ट्री हैज़ बीन एसोसिएटेड with dates. So as we have seen, if you study early history, you would find the history is related only to kings, battles, wars, and kingdoms. But the later or the modern historians today have expanded the scope of history. आज की जो हिस्ट्री है या आज के जो historians हिस्ट्री लिखते हैं, this history is not concerned only with the kings and rulers and leaders. Today's history also includes the life and times of common people. किसी किंगडम की या किसी राजा की आम जनता कैसे रहती थी, उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, the festivals they used to celebrate, their dress, their food, and so on. So with time, the scope of history has changed. The focus of history has moved from kings, battles, and leaders to the history of common people. So we now know what is history and what is the importance of dates. Dates are important because they help us in measuring the change over time. The next topic is, which dates are important? Now we know that dates are important, but do we have to remember all the dates while studying history? क्या हमें सारे dates को याद रखने की ज़रूरत है? Because if we have to remember all the dates, this is going to be very bulky and very problematic for us as a history student. So let us have a look which dates are important for us. The first point says, not all dates are important. Importance of dates depends on our subject matter or area or the topic of study. यानी कि हमें सारे dates याद रखने की ज़रूरत नहीं है. हमें केवल उन डेट्स को याद रखना है, या हमारे मतलब कि केवल वो डेट्स होती हैं जो हमारे टॉपिक से कंसर्न है, या हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हमें केवल उससे ही रिलेटेड डेट्स याद रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी स्टडी टॉपिक्स रिलेटेड टू द ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज इन colonial India, then we will have to concern ourselves with the date of their appointment, their rule in India, their removal, their resignation, death, and so on. यानी कि अगर हम ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज को पढ़ेंगे जो इंडिया में थे, तो इस टॉपिक के लिए हमें केवल उन डेट्स को याद रखना है जो इन वाइसरॉयज और ब्रिटिश गवर्नर जनरल से रिलेटेड है. वो भारत में कब आए, कब अपॉइंट हुए, वो भारत में कितने सालों तक रहे, उन्हें कब हटाया गया या उन्होंने कब रिज़ाइन किया, उनकी डेथ कब हुई, etc. Similarly, if we change our subject matter, or if we start studying topics related to Indian freedom fighters, then the dates we will have to concern ourselves with, or the dates we will have to study, will be related to these leaders' birth, their activities, their movements, their death, etc. यानी कि अगर हम अपने टॉपिक को अब गवर्नर जनरल्स की जगह इंडियन फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड रखें, हम इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, तो अब हमें जिन डेट्स को पढ़ना होगा वो इन लीडर्स के अराउंड घूमेंगी, वो इन लीडर्स से रिलेटेड होंगी. यानी कि ये लीडर कब पैदा हुए, इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की,
इन्होंने क्या क्या आंदोलन किए, ये कब जेल गए, इनकी डेथ कब हुई, etc. So we now know what is history, what is the importance of history, and what dates are important, which all dates we are supposed to remember and which dates we shall not remember. The next topic is how to periodize, that is, how to divide the history into various periods. So, first of all, by periodization, we mean dividing the history into certain sections or certain periods. This periodization or dividing history into periods is necessary because it helps in understanding changes over time. For example, अगर हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया है इनटू 3 पार्ट्स, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो इस पीरियडाइजेशन से हमें चेंज को मेजर करने में काफ़ी आसानी होती है. जैसे इफ़ वी वांट टू एनालाइज द चेंज दैट हैज़ अकर्ड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू मॉडर्न पीरियड, दिस चेंज कैन बी ईजिली एनालाइज्ड बाय पीरियडाइजेशन. यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में बैलगाड़ी होती थी, लकड़ी के पहिए होते थे, एंड इन द मॉडर्न पीरियड दैट इज टुडे वी हैव vehicles that are driven by motor and fuel. We have cars, aeroplanes, boats. एंशियंट पीरियड में कार्स और एरोप्लेन्स नहीं होते थे, तो देयर इज़ अ चेंज. कार्स एंशियंट पीरियड में नहीं होते थे, मॉडर्न पीरियड में होते हैं. तो दिस चेंज is easily studied because we have divided history into these 3 periods. हमें पता है कि एंशियंट पीरियड से लेकर मॉडर्न पीरियड में क्या चेंज आया है, तो इसलिए पीरियडाइजेशन इज़ नेसेसरी. Second reason why periodization is necessary is because it groups common characteristics of a period of time together. Look at the first point. It says that it groups common characteristics, which means every period of history has certain characteristics, and those characteristics are same throughout that period. Let us take the same example. If history को हम divide करते हैं ancient, medieval और modern में, and if we are studying, let us say, the modern history, तो modern history का जो span है that is around 300 years. तो इन 300 सालों में, इन 300 years के जो characteristics हैं वो लगभग सेम है. जिस तरीके का खाना है, जिस तरीके की ड्रेसेस हैं, जिस तरीके की पॉलिटिक्स है, जिस तरीके की इकोनॉमी है, ये इन 300 सालों में सेम है. सिमिलरली जो एंशियंट सोसाइटी थी, उस एंशियंट सोसाइटी का जो स्पैन था वो भी अराउंड 1000 और 2000 ईयर्स था. तो इस 2000 ईयर्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इन 2000 ईयर्स में जो खाना था, जो कपड़ा था, जो ट्रांसपोर्ट था, जो इकोनॉमी थी, वो सेम थी लगभग. तो इसलिए इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में आसानी होती है इफ़ वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड्स. In the colonial India, that is in the British rule, it was a scholar called James Mill who divided the Indian history into 3 parts. The periods or the parts into which James Mill had divided Indian history were first Hindu period, second Muslim, and third British period. This division was widely accepted in that time, but later it was seen as problematic and rejected by many scholars. जब जेम्स मिल ने ये पीरियडाइजेशन किया इंडियन हिस्ट्री का 3 पीरियड्स में, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड, इसे तब एक्सेप्ट कर लिया गया था. लेकिन कुछ सालों बाद जो इंडियन स्कॉलर्स हुए या जो अलग अलग हिस्टोरियंस हुए, उन्होंने इस डिवीज़न को, इन 3 पीरियड्स को रिजेक्ट कर दिया, मानने से मना कर दिया, क्योंकि इन 3 पीरियड्स के हिसाब से जेम्स मिल इंडिया और इंडियन रूलर्स को नीचा दिखाना चाहते थे. जेम्स मिल wanted to show that the British rule was here to civilize the Indians.
He spread the belief that the rulers before the British Raj were either Hindus or Muslims, and in both the cases, the rulers and people were uncivilized and uncultured. जेम्स मिल ने कहा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में आया है यहाँ के लोगों को सिविलाइज करने, यहाँ के लोगों को, इंडियंस को तमीज़ सिखाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिश राज के पहले जो राजा होते थे वो या तो हिंदू होते थे या मुसलमान होते थे। और जेम्स मिल ने कहा चाहे राजा हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों केसेस में राजा और उसकी प्रजा दोनों अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड होती थी और अभी भी अनसिविलाइज्ड है। इसीलिए ब्रिटिश रूल इंडिया में आया है हमें सिविलाइज करने। दिस वॉज द व्यू पुट फॉरवर्ड by James Mill. By doing so, he wanted to justify the British rule in India. He said that since the Indians are ill-mannered, they do not have manners, they do not know how to behave, they are not cultured, it is the duty of the British to teach India these manners. This is the view that was put forward by James Mill. But a few years later, this division of history by James Mill was rejected, and a new division of history was proposed, in which the history was divided into three periods: ancient history, medieval history, and modern history. जेम्स मिल के जो 3 डिविजन्स थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड, उसको स्कॉलर्स ने आने वाले सालों में रिजेक्ट कर दिया और एक नया डिवीज़न आगे रखा गया हिस्ट्री का, जिसमें हिस्ट्री को एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस डिवीज़न को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया। इट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन द बेसिस दैट दिस डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री इनटू 3 was borrowed from the Western world. Scholars said that the concept or the period of modern history could be applied in the West because West had seen the growth of science, reason, democracy, etc. Remember, a little while ago we were discussing that periodization is necessary because each period has a specific characteristic, right? So the scholars said कि जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे हैं वो वेस्ट में एप्लीकेबल है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में साइंस का ग्रोथ हो चुका है, वेस्टर्न वर्ल्ड में डेमोक्रेसी आ चुकी थी, वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप हो चुका था। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उसे आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं कह सकते। The scholars said that in India, the period to which we refer as modern history was ridden with slavery, inequality, domination, and the brutality of the British or colonial rule in India. यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो या मॉडर्न पीरियड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो साइंस, डेमोक्रेसी, रीजन, डेवलपमेंट, ये सब थे। लेकिन जिस पीरियड को आप इंडिया में मॉडर्न कह रहे हैं उस पीरियड में इंडिया में स्लेवरी है, इंडिया में पॉवर्टी है, इंडिया में इनइक्वालिटी थी, इंडिया में ब्रिटिश रूल था, डेमोक्रेसी नहीं थी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई this period of history in India cannot be called as modern history. So these historians refer this period as colonial period instead of modern period. तो इन historians ने कहा चूँकि ये जो पीरियड जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं इसमें वो मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है, तो इस पीरियड को हम मॉडर्न हिस्ट्री ना बोलकर कॉलोनियल हिस्ट्री या कॉलोनियल पीरियड बोलेंगे। सो फाइनली द डिवीजन ऑफ हिस्ट्री दैट वाज एक्सेप्टेड और दैट इज स्टिल एक्सेप्टेड is the division of history into 3 periods: ancient history, medieval history, and colonial history. Now you must have noticed one thing, that since the starting of this lecture
there is a word that has been occurring frequently, the word colonial. Since the very first topic, what is history, we have talked about this word colonial, colonial, colonial. So, what does this word colonial exactly mean? So, when we say that the third part of history in India was colonial period or colonial history, we mean that at a point of time in history, India was reduced to a British colony. यानी कि colonial period का मतलब कि हिस्ट्री में एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक समय पर, इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया था. नाउ व्हाट डज दिस वर्ड कॉलोनी मीन? कॉलोनियल मतलब इंडिया कॉलोनी बन गया था, और कॉलोनी का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन हैड एस्टैब्लिश्ड its control over the economy of India, over the society of India. It had overpowered the local rajas. It collected revenue by force. It bought goods at a cheaper rate in India and produced the crops they wanted for export. Thus, India's economy, polity, society, culture was completely subjugated and subordinated by Britain. This process of complete subordination is called colonization. यानी कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी हो गया था. इसका मतलब ब्रिटेन ने इंडिया के इकोनॉमी पर कंट्रोल कर लिया था, इंडिया की सोसाइटी को कंट्रोल करती थी, यहाँ के लोकल राजाओं को हरा कर यहाँ पर अपनी सत्ता, अपना राज एस्टैब्लिश कर लिया था. वो यहाँ का सामान हमसे कम दामों पर खरीदते थे और यहाँ के किसानों को वही फसल उगाने को बोलते थे जो उनके लिए फ़ायदेमंद होती थी, जो ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद होती थी. तो ब्रिटेन का कंट्रोल इंडिया की पॉलिटी पर, इंडिया की इकोनॉमी पर, इंडिया की जनता पर, इंडिया के फार्मर्स पर, सब पर ब्रिटेन का कंट्रोल हो चुका था. सो दिस कंप्लीट कंट्रोल इज कॉल्ड colonization. So this is what we mean when we say that India had become a British colony. Therefore, the British period or the British Raj in India is also called as the colonial period. Colonial period मतलब कि इंडिया एक कॉलोनी बन चुका था. कॉलोनी मतलब कि ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल था इंडिया के ऊपर. So now we know the three periods into which Indian history is divided: ancient, medieval and colonial period. And we also know what does the word colonial mean. Moving on to the next topic, we will now look at the sources to study the colonial period. Now when we study some book written by historians, the historians refer to some sources. They extract history from some sources of that period. यानी कि अगर हम कॉलोनियल पीरियड की कोई किताब पढ़ते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री की कोई किताब पढ़ते हैं, तो जिस भी हिस्टोरियन ने वो बुक लिखी है, उस बुक को लिखने के लिए या उस हिस्ट्री को लिखने के लिए वो हिस्टोरियन किसी सोर्स को रेफ़र करता है, क्योंकि बिना सोर्स के हिस्ट्री लिखना इम्पॉसिबल है. बिना किसी सोर्स के हमें ये नहीं पता होगा कि उस वक्त की हिस्ट्री या उस वक्त की चीज़ें कैसी होती थी. सो व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी द कॉलोनियल पीरियड, और व्हाट आर द सोर्सेज दैट वी कैन रेफर टू स्टडी द कॉलोनियल हिस्ट्री. Remember, a little while ago we were talking about how the early kings used to have court historians who used to write the history of those kings. क्योंकि वह पुराने राजाओं को इच्छा होती थी कि लोग उनके जाने के बाद भी उनको याद रखें. So this thing was found in the British rulers as well. They wanted to be remembered by the people of India, and this is why the British recorded every policy, every order, every plan, every instruction in a paper.
And these records were written in detail and stored. So, the first source to study the colonial period is the administrative records of the British rulers. अब चूंकि ये ब्रिटिश रूलर अपने हर ऑर्डर को, अपनी हर पॉलिसी को, अपनी हर इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करके रखते थे, so these records serve as a great source. For example, let us say the British Governor General had built a road from Lucknow to Delhi. So they had recorded this policy into a paper and stored it. उन्होंने इसको एक रिकॉर्ड में स्टोर किया कि सच एंड सच गवर्नर जनरल ने या इस गवर्नर जनरल ने लखनऊ से दिल्ली तक इस साल में रोड बनवाई थी. सो व्हेन वी रीड दैट रिकॉर्ड हमें पता चलता है कि यहाँ पर उस टाइम में आज से 100 साल पहले, आज से 200 साल पहले कोई रोड हुआ करती थी जो इस गवर्नर जनरल ने बनवाई थी. So, in this way, this recorded administrative papers serve as a source, and these records were stored in specific record rooms. अलग से record rooms बनाए जाते थे जिनमें इन records को रखा जाता था. Every major office, like the Tehsildar's office, the collector's office, and even the courts, had their own record room. हर ऑफिस का अपना खुद का एक रिकॉर्ड रूम होता था जहाँ पर उस ऑफिस के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज, ऑर्डर्स को स्टोर किया जाता था. इन द अर्ली पार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, these records were handwritten on a paper by specialist writers called calligraphists. And later, a few years later, when electricity was invented and printing press was invented, these records were spread by printing press, and bulk multiple copies of these records were printed and stored. So by this bulk production or bulk printing of the records, these records could be kept safe for a longer period of time. And it is by studying these records that we come to know about the history of colonial India. The next source to study the colonial period are the surveys and mapping done by the British. Now, in order to expand their rule in India, what the British rulers did was that they carried out detailed surveys. वो हर गांव, हर शहर में जाकर सर्वे करते थे, and through these surveys they came to know about the people, the cropping pattern, the crops that the farmers used to grow, the religion of India, the local history, the local stories, the caste system in India, and so on. उन्हें इन सर्वेज़ के थ्रू काफ़ी सारी डिटेल्स पता लगे इंडिया के बारे में, और उन्होंने उन डिटेल्स को सर्वे बुक्स में रिकॉर्ड किया. उन सर्वे बुक्स में वहाँ के लोकल लोगों के बारे में, वहाँ की लोकल हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के क्रॉप्स के बारे में, और ये तमाम नॉलेज उसमें थी. और यही नॉलेज, यही सर्वे बुक्स को पढ़कर आज कॉलोनियल पीरियड के बारे में हमें हिस्ट्री पता चलती है. द ब्रिटिश set up a separate department called the Survey of India. This department was responsible to produce maps of India. एक सेपरेट डिपार्टमेंट, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम सर्वे ऑफ इंडिया रखा गया. और इस डिपार्टमेंट का काम केवल यही था कि वो इंडिया के मैप्स निकालता रहे. और आज भी सर्वे ऑफ इंडिया इज़ स्टिल द रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस मैप्स इन इंडिया. इंडिया में आज भी जितने मैप्स बनते हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया ही बनाता है. Another source to study the colonial period was the census that they carried out. In census, what they did was they used to count the population of entire India every 10 years. हर 10 साल में वो इंडिया की पॉपुलेशन को गिनते थे, जिसके वजह से उन्हें अपनी पॉलिसीज़ बनाने में और ये अपने रोल को एक्सपैंड करने में आसानी होती थी. So these census reports also serve as a source to study the colonial history.
But there is one problem with these sources, whether it is the administrative records और the surveys or maps or census records, इनमें एक problem है. And the problem is that these documents were put up by the British officials. तो जब British officials ने ही ये documents बनाए, it is very obvious that these documents will have only the point of view of the Britain or of the British officials. इन डॉक्यूमेंट्स में केवल वही था जो ब्रिटेन चाहता था या जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स चाहते थे. इसमें इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू या इंडिया के से रिलेटेड, इंडिया के लोगों से रिलेटेड, इंडिया के लीडर्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं था. द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टेल अस ओनली द ऑफिशियल व्यू. इट डज नॉट केटर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियंस. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त के इंडियंस क्या सोचते थे या उस वक्त के आम जनता में, उस वक्त के लीडर्स के बीच क्या हो रहा था, उसके लिए वी रेफर टू अदर सोर्सेज लाइक द डायरीज ऑफ द पीपल. बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो डेली डायरी लिखते थे. दे यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द इंसिडेंट्स दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट डे. और ये डायरी से हमें पता चलता है कि इंडिया की आम जनता के बीच क्या हो रहा था. The other sources were accounts of pilgrims. बहुत सारे लोग थे जो इंडिया में घूमते थे और घूमते हुए उन्हें जो दिखता था वो अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स में लिखते थे. इसके अलावा there were leaders, their biographies, autobiographies and other booklets. Now what most of the leaders used to do is that they used to write the story of their life. For example, Mahatma Gandhi has written his own autobiography. Subhash Chandra Bose has written his own autobiography. So these leaders write the Indian point of view in their autobiographies. कि इंडिया के लोगों को क्या लगता था, इंडिया के लोगों के बीच क्या चल रहा था, या इंडिया की जनता का क्या हाल था ब्रिटिश रूल में. And the third point is newspapers were also published and spread. Various novelists and writers also wrote books, poems and novels about the British era. All these act as a source to study the colonial period. As you can see at the bottom of your screen, the white document on the left hand side is Bombay Gazette and it is a newspaper of the British era. ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश एरा में इंडियंस निकालते थे, इंडियंस पब्लिश करते थे, जिसमें इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता था. तो आज जब हम उन न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, वी गेट टू नो इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू इन द colonial period. And on the right side you can see Anand Math. This is a book written by Bankim Chandra Chatterjee. और इसी तरह बंकिम चंद्र चैटर्जी की ही तरह बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे नॉवेलिस्ट्स ने नॉवेल लिखी, बुक्स लिखी, स्टोरीज़ लिखी, जिनमें वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते थे, इंडिया के तरफ से स्टोरीज़, बुक्स, नॉवेल्स लिखते थे. सो दीज also act as a source to study the colonial period. So when we talk about the sources to study the colonial period, we can divide them into two: the official sources and the other sources. Official sources may we have administrative records, surveys, maps and census. In other sources, we have the diaries of people, the accounts, biographies, autobiographies, newspapers and novels and books. With this, we come to an end of the first chapter of our history. We saw the definition of history. We saw the importance of dates. We saw which dates are important and which dates are not. Next, we saw the periodization of history into ancient, medieval and colonial history. Next, we saw the definition of the word colonial. We understood the meaning of the word colony. And at the last, we saw the sources to study the colonial history of India, the official sources and the other sources to study. In the next lecture, we will begin with the first topic of our modern history. We will start in the next lecture, in the next chapter, with the decline of the Mughal Empire, the end of Mughal Empire,
and the advent of Europeans, how the Europeans entered into India. Till then, like this video, share this video, and subscribe to our YouTube channel to stay updated. Thank you.